लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था लाइट के बारे में, जहाँ पर हम लोग फिर से एक बार समझे थे कि लाइट होता क्या है। फिर हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। रिफ्रैक्शन एक न्यू टर्म था जिसको हम लोगों ने समझा यहाँ पर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को और डिटेल में समझा कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स विच वी यूज फॉर द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शन के कंडीशन थे उसी से मिलते जुलते हुए टर्म्स थे, बस इसमें एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे एक नए फॉर्मेट के रूप में आया हुआ था। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन का रीजन जो है वो मीडियम कैसे हो सकता है, कोई भी मीडियम जो है वो रिफ्रैक्शन को कैसे काउस करता है, या रिफ्रैक्शन किस तरह से किसी पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ये हम लोगों ने समझा था व्हेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पर हम लोग किसी भी मीडियम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज रेयरर और डेंसर मीडियम। फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्टेड रे को समझा कि उसकी जो बेंडिंग होती है, एज वी डिफाइन फॉर रिफ्रैक्शन दैट व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट यूज्ड टू बेंड फ्रॉम its actual path. So we had understood that in which direction it is going to bend, यानी वो किधर की तरफ बेंड करने वाली है, whether it is going to bend towards the normal or it is going to bend away from the normal. So that we had understood with the respect of the medium, कि किस तरह के मीडियम से क्रॉस होने पर उसकी बेंडिंग किस तरह की होती है, that we had seen over there. Then we were discussing about the laws of refraction. So what is the law of refraction? As we had studied the laws of reflection, in the same way we had understood the laws of refraction. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली दो लॉज है, जहां पर कि the first law says the incident ray, the normal and the refracted ray used to lie on the same plane of the intersection of the two mediums. और इसका जो दूसरा लॉ है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जहां पे हम लोग समझते हैं साइन आई अपॉन साइन आर यूज टू बी कांस्टेंट। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये कांस्टेंट का कंडीशन आता है। सो जस्ट वंस अगेन आई एम टेलिंग फॉर दिस थिंग, जब हम लोग साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ करते हैं, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि साइन आई यूज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। और यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया जाता है तो हम लोग एक इक्वल्स टू साइन विद अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो साइन आर इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट विद साइन आर। और फिर हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर अगर करते हैं तो ये इक्वल्स टू के कांस्टेंट होता है ना। व्हाट डज दिस के कांस्टेंट रेफर्स टू? इस के कांस्टेंट को हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड टू बी एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच वी कॉल टू बी एज और व्हिच वी यूज टू से एज दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। यानी लाइट रे की बेंडिंग होने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो बेंडिंग होने की जो टेंडेंसी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में एक फेनोमिना है या एक एक ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग अलग अलग मीडियम में ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जब लाइट रे उससे क्रॉस होती है। और यहीं पे हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी विल स्टडी दिस टर्म अगेन इन क्लास 10th। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है, then we used to go for the bending of the light on the comparison of of the air। नॉर्मल एयर जिसको वैक्यूम के कंसिडरेशन में लिया जाता है, वहां पर हम लोग किस तरह से बेंडिंग होती है उसके बेसिस पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वंस अगेन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो ओवर हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स अस that when the light ray is traveling from one medium to another medium, then how much it is going to bend. So see students, whenever we do use to observe that the light ray is going from a rarer to denser medium, it depending on the medium how much the light ray is going to bend, उस medium के ऊपर डिपेंड करता है कि light ray वहां पर कितनी bend करने वाली है।
तो इस चीज को हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, फिर से एक बार बता रहे हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मीडियम है, इस फर्स्ट मीडियम को हम एयर में एयर रखते हैं फॉर ऑल द कंडीशन। हर कंडीशन को हम यहाँ पर एयर ही रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लाइट रे को यहां से क्रॉस कर रहे हैं, लाइट रे को अगर हम यहां से क्रॉस करेंगे फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व, हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा, जस्ट अ मिनट, ओवर हियर एंड ओवर हियर। अब यहां पर अगर हम तीन अलग अलग तरह के मीडियम्स को लेते हैं, सच एज फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन आई टेक इट एज वाटर, वाटर ले रहे हैं, फिर हम ग्लास ले रहे हैं, एंड देन हम डायमंड ले रहे हैं, ठीक है। तीन अलग अलग मीडियम ले रहे हैं। तो एयर से वाटर डेंसर है, एयर से ग्लास भी डेंसर है, एयर से डायमंड भी डेंसर है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वी नो दिस थिंग दैट द लाइट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो हम लोगों को इसके प्रिंसिपल से समझ में आ गया है कि ये लाइट रे किधर की तरफ बेंड करने वाली है, टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाली है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। दिस इज द एक्चुअल पाथ, आई एम जस्ट ड्राइंग द एक्चुअल पाथ ओवर हियर। अब अगर हम लोग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, जैसे कि अभी भी बताया, जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोगों को क्या ऑब्जर्व होगा, द लाइट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट द लाइट रे इज नॉट गोइंग टू बेंड इन द सेम मैनर फॉर ऑल द थ्री कंडीशन। फॉर वाटर इट विल बेंड लेस, वाटर में इसकी बेंडिंग कम होगी, ग्लास में इसकी बेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, और डायमंड में इसकी बेंडिंग और ज्यादा होगी। Now, why it is so? It is because of the difference in the speed of the light while we do use to observe it is traveling from different mediums over here. यहां पर जब एयर से वाटर वो लाइट रे ट्रैवल कर रही है, तो ये समझने की जरूरत है कि ओवर हियर द स्पीड डिक्रीजेस अ लिटिल ओनली। यहाँ पे बस छोटा सा डिफरेंस हो रहा है, ये बहुत छोटे से डिफरेंस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे चेंजेस आती है, जिसकी वजह से जो बेंडिंग होगी वो थोड़ी सी होगी, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे ग्लास में, तो एयर से कंपेयर करेंगे ग्लास में, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी वो और ज्यादा डिक्रीज करने वाली है। और जब हम लोग देखेंगे डायमंड में, तो इसकी स्पीड जो होगी वो और ज्यादा डिक्रीज करेगी। So just thing which you need to remember that when the light rays speed is decreasing more and more, जब ये ज्यादा ज्यादा में चेंज होता है, जब जितनी ज्यादा डिफरेंस होगी वहां पर हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि उसकी बेंडिंग जो है वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, सपोज अगर हम कंपेयर करके देखते हैं एयर का, तो एयर का हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्मल एयर का है। अगर वैक्यूम का करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और उसी को कंपेयर करते हैं विथ वाटर के साथ, तो वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है। सो लाइट रे की स्पीड अगर हम लोग वाटर में देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.3 2.25 के कुछ कुछ नजदीक आती है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम एयर से ग्लास में डिफरेंस देखते हैं, अगर ग्लास में लेते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग डायमंड में लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाती है। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट द डिफरेंस इज गोइंग टू बी ह्यूज। अगर हम यहां पर देखते हैं 2.8 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2.25, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम लोग 2.8 से कंपेयर करते हैं, जस्ट 10⁸ से कंपेयर करते हैं फॉर 2 इंटू 10⁸, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा होता है। सो वी विल डू ऑब्जर्व अ लिटिल मोर बेंडिंग। और जब डायमंड में देखते हैं तो ये काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमको क्या ऑब्जर्व होती है कि द लाइट रे यूज टू बेंड मैक्सिमम, एंड व्हेन द लाइट रे बेंड्स मैक्सिमम देन इट शोज दैट द स्पीड डिक्रीजेस मोर ओवर देयर। तो अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन होगी, सो वी विल गेट अ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, a little more refractive index for glass and maximum refractive index for diamond। तो ये चीज हम लोग को समझना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कैसे? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी कैलकुलेटेड ओवर हियर विथ अ फॉर्मूला व्हिच सेज स्पीड ऑफ लाइट in medium 1
1 upon speed of light in मीडियम 2। इसके बेसिस पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे अभी अभी हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, वहां पर भी जो सेकंड लॉ है, उस सेकंड लॉ से हम लोग यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर वी हैव टू गो फॉर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसके कैलकुलेशन से भी हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सॉल्यूशन हो सकता है। बट ये वाला ज्यादा इजी है, जिसके बेसिस पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ओवर हियर वी विल टेक द मीडियम 1 एज एयर। हमेशा याद रखना है मीडियम 1 जो है वो एयर लेंगे फॉर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी किसी पर्टिकुलर मीडियम का कैलकुलेट करना हो तो हमेशा मीडियम 1 को लेना है एयर, और एयर यहां पर हो जाएगा अ सेंस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का कंडीशन लेंगे जहां पर स्पीड ऑफ द लाइट है 3 into 10 to the power 8 meter per second। Again, this is the approximate value. It is actually 2.9 into 10 to the power 8 meter per second. So we taken as round up as 3 into 10 to the power 8 meter per second। तो ये हम लोगों का मीडियम 1 हो जाएगा, और फिर उसी के बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड फॉर दैट वन कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों को कैलकुलेट करना है फॉर एयर टू वाटर, तो एयर टू वाटर का अगर हमको कैलकुलेट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हम लोग यहाँ पे लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में स्पीड ऑफ द लाइट लेंगे अपॉन हम लोग ले लेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन इन वाटर। अब यहाँ पर वाटर का यूज करेंगे। अब जब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग प्लेस अप करते हैं, सो एज फॉर एग्जांपल अभी हम एयर का लिए हुए थे, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 meter per second। एंड फॉर वाटर हाउ मच इट विल बी, ये हो जाएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.25 into 10 to the power 8। कर रहे हैं। अरे क्या हो गया ब्लैक यस अक्षर, स्क्रीन क्यों हो गया? ओके। सो ओवर हियर अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सो वी कैन कैंसिल दिस मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। 10 to the power 8 and 10 to the power 8 will be cancelled with each other, so it is going to be 3 by 2.25। so अगर decimal को remove करते हैं, so we will get 100 over there, sorry, double zero only I will place। so with 25 you can cancel it over here, so it is 12 times and 9 times। so again with 3 you can cancel 4 times and 3 times, so it is going to be 4 by 3। so when you will go for the division, it will be 1.33 it is going to come। so approximately इतना निकल कर आता है। अच्छा चलो, यहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम लोगों ने सेकंड मीडियम लिया था ग्लास का, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हम करते हैं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के लिए हम क्या करेंगे? सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले एयर का लेंगे और फिर हम लोग लेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस अप करते हैं तो ग्लास में ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाता है, तो 2 into 10 to the power 8 meter per second। एंड सॉरी, एयर का ऊपर में लेंगे, फर्स्ट मीडियम एज एयर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सो दैट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second। एंड सेकंड मीडियम क्योंकि उसमें वो क्रॉस कर रही है, सो दैट इज 2 into 10 to the power 8 meter per second। अब अगर यहाँ पर इसको कैंसिल किया जाए, दिस वन एंड दिस वन विल कैंसिल, सो इट इज 3 by 2, सो इट इज गोइंग टू बी 1.5। देखो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डोंट हैव एनी ऐसा यूनिट। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम यूनिट्स। ये दो सेम यूनिट का रेशियो है, जिस वजह से इसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। सो सपोज फॉर एग्जांपल इफ इट इज बीन आस्क्ड why do refractive index don't have any SI unit? So in a simple way you can say refractive index is the ratio of two same units, thus it is not having any SI unit। it is the same thing or the same situation what we had understood for the relative density। जब रिलेटिव डेंसिटी की भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे फ्लोटेशन चैप्टर में, पॉइंट फोर्स के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम बताए थे कि रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो हैविंग नो एसआई यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम यूनिट्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड that why relative density is not having SI unit or refractive index is not having any SI unit।
So you have to just answer it in a simple way. Refractive index or relative density, not only density, relative density is not having any SI unit because they are the ratio of the same kind of units. Okay, now let's come to the topic over here. So as we were talking about the absolute refractive index, तो जैसे कि देखो absolute refractive index के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हम एयर से वाटर में लाइट रे को लाए, फिर हम एयर से ग्लास में लाइट रे को लेकर आ रहे हैं, फिर एयर से हम डायमंड को लाइट रे को लेकर आ रहे हैं. सो यहाँ पे हम जैसे कि बताया कि बेंडिंग ज्यादा हो रही है. अगर हम वाटर से कंपेयर करते हैं ग्लास में तो बेंडिंग विल बी मोर, और अगर ग्लास से कंपेयर करते हैं डायमंड में सो इट्स बेंडिंग विल बी मोर. व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग ओवर देयर. So if the speed of the light ray is decreasing, then the bending of the refracted ray will be more, and this used to be shown by the refractive index. इसी चीज को refractive index के थ्रू दिखाया जा सकता है. So if you go for the glass and water, you can observe the difference. The refractive index for water is 1.3 approximately, and for glass it is 1.5. तो यहाँ पर ये increase हो गया. अगर हम यही कंडीशन लेते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ डायमंड, अगर हम डायमंड के लिए लेते हैं रफली, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी एज 1.25 into 10 to the power 8. So these two will be cancelled. So it is going to be 300 by 125. So with 5, if you will cancel, so it will cancel for 12 times and it will cancel for 5 times. So it is going to be 2.4. तो देखो यहाँ पे refractive index और ज़्यादा बढ़ गया. So when the refractive index is more, then the bending is also more. So when we go for a higher, denser object, then we do observe that the speed decreases maximum. And when the speed decreases maximum, or the speed decreases in a higher value, then the bending of the light ray will be also more over there. तो इस चीज को समझने की जरूरत है. जब भी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर से इस चीज को समझ लो, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल गो फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम विथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट स्पेसिफिक मीडियम. उस मीडियम के लिए बात करेंगे. लेकिन अगर हमको सिंपली सिर्फ बोला जा रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर, याद रखो, अगर क्वेश्चन तुमको बोला जा रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर, तो जिसके लिए बोला जाएगा, सच एज फॉर ग्लास इट इज बीन आस्किंग, सो इट विल बिकम आवर मीडियम 2. And for what it has been asking, it is asking for water, so it will be medium 1. तो इस तरह से हम लोग वहां पर स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 का कैलकुलेशन करेंगे, और फिर उसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. So like this you can calculate the refractive index for any medium. So this particular topic we are going to discuss once again in a much detailed manner, and there would be so many different calculation in our class 10th syllabus. Okay, so over there again we have to study that. Now here you can see some of the mediums refractive index is provided to you. I had provided, it is already given in your book also, you can go and check it out. So you do used to observe that the refractive index gradually increases over here. Now for vacuum के लिए ये 1 है. क्यों 1 है? Because for vacuum if I will go, it is going to be 3 into 10 to the power 8 upon 3 into 10 to the power 8. So यहाँ पर ये दोनों का कैंसिलेशन, ये 3 और ये 3 का कैंसिलेशन कर देने पर इसके वैल्यू आ जाएगी 1. So that's why it is going for 1. And for air it is increasing a little bit because it is 3 into 10 to the power 8 upon 2.8 into 10 to the power 8. So it is almost equals to 1. तो ये वैल्यू आ जाती है. फिर वाटर में इसकी स्पीड और डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस अ लिटिल मोर. For ice we do used to observe it increases a little more. So for different medium the refractive index used to be different, and when the refractive index is different it means that the bending of the light ray is also different over there. Now this is the reversibility of the refraction. This we will not discuss here, this we will discuss in class 10th only. Okay, now let's see for the lateral displacement. One of the thing which we have to understand over here, that is the refraction through a glass slab. So
this week, if it will be possible, then we will do this one as our lab work. Okay, पॉसिबल होगा तो इस वीक हम लोग इसका लैब वर्क करेंगे, हम लोग समझेंगे किस तरह से रिफ्रैक्शन का ये वाला फेनोमेना और भी कंडीशन तुम लोगों को दिखाएंगे रिफ्रैक्शन के लिए. सो दिस दैट वन वी विल बी डूइंग इन फिजिक्स लैब दिस वीक, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू डू दैट वन. सो व्हाट इज दिस कंडीशन शोज अस ओवर हियर, ये क्या यहाँ पर हमको दिखा रहा है? So this is the refraction which we can observe through a thick glass panel. अगर एक थिक ग्लास पैनल लेते हैं और उसमें से लाइट रे को क्रॉस करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर, तो हम लोगों को ऑब्जर्व होता है कि इट यूज्ड टू बेंड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ. एंड ओवर देयर we do observe a very interesting thing that is called to be as the lateral displacement. So what is lateral displacement and how that occurs, that we will understand over here. So let's see the basic thing first and then I will come to this particular figure. So I will go to the next page. So in this one what we have to do, so इसमें हम लोग basically एक thick glass panel ले लेते हैं, ठीक है, transparent glass panel. जिस तरह की ग्लास पैनल तुम लोगों ने विंडो पैनल्स में देखी होगी या कहीं पे भी देखते हो, उस तरह का एक थिक ग्लास पैनल ले लेना है, ठीक है. अब क्या करेंगे, हम इस पे लाइट रे को क्रॉस करेंगे विद अ पर्टिकुलर एंगल. हम एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिसाइड कर लेते हैं एंड दैट एंगल विल बी मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट easy which we can take between 40 to 50 degree. अगर 40 to 50 degree के बीच में लेते हो then that experiment will be much better to explain the condition of the lateral displacement, ठीक है. So say as for example over here I had taken as 40 degree. Suppose हम यहाँ पर 40 degree का वैल्यू लेते हैं for the angle of incidence. Now we know for this thing that the light ray has to travel in a straight path, but as it is going to transfer or it is going to travel from its sorry, from a different medium, so what will happen, it will change its path. तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे की पाथ चेंज हो जाएगी. सो वेयर इट इज गोइंग टू चेंज, सो इट इज गोइंग टू बेंड ओवर हियर. लाइट रे यहाँ पर बेंड हो जाने वाली है. सो व्हाई इट इज बेंडिंग ओवर हियर, because light ray is traveling from a rarer medium to denser medium. So over here we are having air, here we are having glass. So compared to air, glass is a denser medium. So what happens, the light ray used to bend towards the normal, तो वो normal की ओर bend कर जाता है. So we will observe a certain angle of refraction also. यहाँ पर हम लोगों को angle of refraction दिखेगी. So whatever the value it will be less than 40 degree. Now after traveling from this point to this point, it is going to change its medium once again. अगर हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, say as for example this is A, this is B, this is C. So A to B वो एयर में ट्रैवल कर रहा था, so it was traveling straight. But at this particular B point, it had changed its medium, so light ray had bended towards the normal. Now B to C वो फिर ग्लास में ट्रैवल कर रहा था, so it was traveling straight. But again, when it is going to come from this particular point at this C point, तो यहाँ पे फिर अपना मीडियम वो चेंज करने वाला है. So what will happen to the light ray? It is going to bend away from the normal. ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी. So over here, this had to be its path. Just a minute, I will go for this color. Okay, this had to be its path. ये इसका path होना चाहिए था, लेकिन वो अपने इस path को छोड़कर away from the normal चली जाती. So when it refracted like this, as I said, one interesting phenomena occurs. What is the interesting phenomena? You can observe that it got parallel to the actual pathway of the light. अगर मान लो, suppose for example मान लो यहाँ पर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं होता, तो ये जो AB लाइट रे है, it had been traveled straight over here. ये तो एकदम सीधे चली आती, इसी पाथ पर वो एकदम सीधी चली आती. लेकिन यहां पर ये ग्लास पैनल होने की वजह से इट हैड बेंडेड ओवर हियर, ये यहां पर बेंड हो गई है.
and again it had traveled over here and bended again. So when you compare these two rays, जब तुम इन दोनों rays को compare करते हो, you do used to observe that they became parallel to each other. So this shift which has been occurred, the shift which has been occurred over here, that shift is called to be as the lateral displacement. And this we do use to observe due to the dual refraction which has been occurred over here. Once the refraction had took place when the light ray had changed its course from air to glass, and second time it had changed its path when it been traveled from glass to air once again. So this is a very interesting phenomena which we do use to observe at different places or in different conditions. So this is the condition of the refraction. So you can see over here that this light ray has been changed its path. Now, if I will produce a line, if I will produce this ray over here, it will be parallel to its condition over here. So these two lines are parallel to each other. So that shift which has been occurred, that shift is called to be as a refractive, sorry, the lateral displacement, which is the result due to the refraction of light. So you can see over here. So it is called lateral shift or lateral displacement. So this is the relation which you need to understand. Now, one more thing which you need to remember over here, that if the light ray has been passed through this particular glass slab in a perpendicular manner, सपोज अगर यहाँ पे लाइट रे को हम परपेंडिकुलरली क्रॉस करते, then what would have happened over here? So you must remember, if the light ray is coming perpendicular on this glass slab, then we will observe that the light ray will cross through without any interruption. यहाँ पे विदाउट रिफ्रैक्शन, वो बिना रिफ्रैक्शन किए हुए वो सीधे सीधे उससे क्रॉस कर जाती है. So this is a very interesting thing which you will experience when you will perform it in the lab. Okay, so I will try to do this thing in this week's physics lab. If it will not be possible, then surely next week we will perform this experiment and you can be able to distinguish the pathways. So these are the things which you need to remember and understand for the condition of refraction. So lateral displacement. And then you have to come across for prism. Okay, so when we do used to study for the refraction, not only the glass slab is the thing through which the refraction used to take place and one phenomena as lateral displacement occurs, but we have to go for different kinds of transparent objects. So one specific kind of transparent object is in a specific pattern that is called to be as a prism. So when we do used to call for a prism, then it is a transparent component which is mostly made up of glass. Nowadays we do used to make some kind of plastics also, means we make prisms with some kind of plastic or some kind of crystalline material, but mostly it has been made with glass, and it is of different kinds, different forms, and when the light ray is allowed to pass through it, refraction takes place. And because of refraction, so many different kinds of conditions we do use to experience. One of the very common thing which we do use to experience, that is the formation of spectrum. When the light ray is allowed to pass through a prism, then the light ray gets break down into its 7 color components. That is called to be as the dispersion of light. Now, what is dispersion of light and what are the things which we have to go for that one? We will discuss it further. So first, let's understand what happened when the light ray used to cross through a prism. जब लाइट रे को हम लोग एक प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, किस तरह के होते हैं कंडीशंस, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, हम लोगों के पास कुछ ही मिनट बचा हुआ है, तो बस प्रिज्म से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक फेनोमेना पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन के वजह से होती है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज द मिराज फॉर्मेशन. ओके, सो दोस थिंग्स आर आल्सो देयर. सो प्रिज्म, इस तरह के ग्लास पैनल्स होते हैं, इस तरह के कई सारे ग्लास पैनल्स जो होते हैं वो प्रिज्म के पैटर्न में होती हैं. जो नॉर्मल ग्लास पैनल का जो हम लोग प्रिज्म लेते हैं वो लेते हैं ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस. रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर हम लोग इस तरह के रेक्टेंगुलर कर्वेचर्स लेते हैं दोनों तरफ से,
और फिर इसमें से हम लोग लाइट रे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें काफी सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म भी होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है। तो अभी के लिए याद रखना है कुछ इस तरह से आज के क्लास के लिए, फिर कल के क्लास के लिए हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब लाइट रे को यानी इंसिडेंट रे को जब हम लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं एक प्रिज्म से फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, से एज फॉर एग्जांपल दिस साइड, तो यहाँ पर लाइट रे एंटर होने के बाद इट यूज टू बेंड ओवर देयर, ये बेंड होती है एंड इट गेट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। व्हाई इट इज सो? because outside it is air and inside it is glass. So glass is denser than to air. So what happens to the light ray? It gets bent towards the normal. Now again, when it been traveled till here, it will travel in a straight manner because it is traveling through the glass only. But again, at this point, it has to change its course over here. So it is going to change its course from glass to air again. So what happens? It bent away from the normal. So this skips out. So this is called to the emergent ray. And this is called to be the incident ray. And this is the main refracted ray. So when the light ray used to enter through a prism, अगर हम लोग prism में देखते हैं, तो लाइट रे की जो एंटर होती है, जो लाइट रे अगर इस तरह से एंटर होती है, सो इट यूज्ड टू बेंड वंस एंड देन अगेन बेंड लाइक दिस, and like this you can say that if the light ray is coming towards the prism from the base, then the light ray is going to bend towards the base. So like this kind of phenomena we have to understand, and in this one some of the term which you need to remember over here, this is the angle of incidence, which is obviously known to be as the angle formed between the incident ray and the normal ray. This is called to be the angle of emergence, which is just formed between the normal and the final refracted ray. And if we produce this actual incident ray and the final refracted ray, then they used to intersect or they used to combine together at a particular angle, which is called to be as the angle of deviation. So with this one, we can understand that how much the light ray had bended. When the light ray is changing its path, then how much the light ray is bending from its actual path, that can be understood with the help of the angle of deviation. So these things you have to just know for now. It is not so very hard that you have to learn it now only, but if you will do it, it will be easy for you, because these things you have to study in more detail in class 10th as well as in class 12, and on the basis of this there are some numericals also. But for now you just go for the names. If you will learn the names, then it will be much easy for you to understand. Now, tomorrow's class, we will understand about the spectrum formation, the dispersion of light, as well as some of the impacts of refraction in our day-to-day life. Okay. And with that one, I will ask for the problems also. If you do have any problem or any doubt, you can ask over there. So today's class, only 1 minute is left out for today's class. So I will not be able to continue for that. So in that time, you all please learn it, and tomorrow we will discuss problem as well as some more topics also. Okay. So thank you for today. Bye everyone. Good night.